Good morning. Yes. From the Delhi Court, carried forward item 1 criminal appeal DB number 191 of 2018. Mr. Anurag Kashyap for the appellant. Mr. Bholanath Oja for the state. This is twice rejected by this Honorable Court and once by Honorable Supreme Court also, Your Lordship. What's the new ground? Yes, Your Lordship. What new ground? New ground, Your Lordship, is only the period of custody, Your Lordship. Custody since 14/8/2014. Throughout, he was in custody throughout the trial, Your Lordship. And So custody would be still less than 8 years. yes, Let him remain inside. So much consideration has. Lordship may pass the reason order if Your Lordship so please. Very well. Sister, no case? No case, Lordship. Third learned counsel for the appellant, Mr. Anurag Kashyap, and learned APP, Mr. Bholanath Oja, on the prayer for suspension of sentence, renewed prayer for suspension of sentence made through IA number 360 of 2022. Stop. Petitioner has renewed the prayer for suspension of sentence. Earlier, the prayer for suspension of sentence of this appellant was rejected twice on merits after consideration on the materials on the lower court records by order dated 23rd July 2018 and 24th October 2019 by coordinate bench of this court. The special leave, what is the case SLP number, Mr. Kashyap? SLP number is 1465 of 2020. Was preferred by the appellant against the refusal of prayer for suspension of sentence was rejected on Rejected on 18/2/2020. 18th February 2020. Stop. Learned counsel for the appellant has renewed the prayer primarily on the grounds of the period of custody undergone by the appellant. नहीं उसके बाद लिखिए. Thereafter, once again, the prayer was dismissed as thereafter once again prayer for suspension of sentence was dismissed as not pressed by an order dated 18th August 2021. Stop. Learned counsel for the appellant has renewed the prayer primarily on the ground of custody. Since the appellant has been in jail from 14th August 2014. Stop. He is suffering life conviction under section 364 capital A of the IPC. Learned APP has opposed the prayer. We have considered the submission of learned counsel for the parties and taken note of the background materials referred to above, as also the grounds for renewal of prayer for suspension of sentence. Since earlier the prayer for suspension of sentence has been rejected on merits and no fresh grounds have been made out on merits on the part of the appellant. Stop. So, he remained in custody for more than 7 years, my lord, 7.5 years. That I have already dictated. That argument I have already indicated. So far as the period of custody is concerned, the appellant has not has completed custody of about 7 years, 7.5 years till date against this conviction for life under section 364A of the IPC. Stop. We do not
therefore we do not feel inclined to enlarge the appellant on bail on the grounds of custody as well, since the same is not yet sufficient for reconsideration of his prayer. Accordingly, IA number so and so is dismissed. Lordship, may I submit only one. The name of the senior counsel may kindly be indicated since. May appear. Yes, surely. Mr. Obliged. Obliged. Okay, sister. None, Lordship. There's one more. है वो ब्रदर को ज्वाइन करने के लिए Lordship.
2022 का कैलेंडर है हाईकोर्ट में। हाँ है। उस दिन लगवा दिए। अच्छा। Good morning, brother. Good morning. Good morning. Good morning, everybody. From the daily call list, under the heading for orders, item 1, criminal appeal DB number 396 of 2017, Mr. Anurag Kashyap for the plaintiff, Mr. Niti Sinha for the day. मिस्टर कश्यप, इसमें भी 10 इयर्स नहीं हुआ है अभी तक। कहाँ गए मिस्टर कश्यप? मिस्टर कश्यप, Lordship, I'm just informing Lordship, he's actually out of station. There must be some network connectivity problem, Lordship. हाँ, we are just expressing our. Mr. Kashyap is now join this. Mr. Kashyap is there on screen. तो मिस्टर कश्यप, ये इसमें भी कस्टडी अभी 10 साल से थोड़ा कम है। Yes, my lord. ये आइटम 1 में कस्टडी 24/9/12 से है, तो सितंबर में 10 साल होगा, उसके बाद करीब पहले डिसमिस्ड एज नॉट प्रेस्ड हो चुका है ट्वाइस। और बोलिए तो हियरिंग में लगा दे, बेंच अच्छा चल रहा है, आप बहस कर लीजिए हियरिंग का। हाँ, वो तो खैर यही जा सकता है। कश्यप जी, आपका म्यूट है या आप जानबूझ के म्यूट रहना चाह रहे हैं? माइक ऑन कर हम बस इन्फॉर्म करते रहते हो, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम बात कर लेते हैं। थोड़ी देर में बात करते हैं बस आगे। नहीं तो कश्यप जी wants to remain mute on our observation. Yes, my lord. Am I audible, my lord? Yes, now you are fully audible. तो कह रहे थे कि 10 साल अभी पूरा होने में कुछ समय है, थोड़ा दिन और रह देने दीजिए। हाँ, वो तो है, बट जो लिखी है कि 2.5 साल के बाद फिर हम आ रहे हैं, उसमें मुझे बोला गया था कि कुछ दिन और रहिए, तो अब तो मुझे लगभग 24/9/12 से जेल में है, तो जैसा हुजूर का आदेश हो। नहीं, आपने पत्नी को काटा है। एक तो आप वकील थे, वकील की शादी इतनी डिफिकल्ट, उसके बाद पत्नी को काट दिया। पत्नी को काटने के बाद पैंट, खून, छुरा, सब खून लगा, आपके साथ रिकवर भी हो गया। अब बचा क्या उसमें? बचा यही है कि हियरिंग बचा है, हियरिंग का जो है वही बचा। इसीलिए हम लॉर्डशिप को कह रहे थे कि इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं हियरिंग के लिए। कहाँ बार बार बेल में आए हैं, हियरिंग कर ले, वकील साहब है। एक चीज और कहेंगे कि हुजूर, वकील का शादी तो मुश्किल नहीं होता है, दहेज वेज मिलना मुश्किल होता है। नहीं, शादी मुश्किल होता है, इसे मत बोलिए। शादी तो हो जाता है। चलिए खैर छोड़िए। दहेज नहीं मिलता है, इसीलिए तो इस तरह का कांड हो गया। है तो रीजन बड़ा दूसरा, लेकिन अब जो चूंकि हम तो लगता है खाली नहीं करेगा तो हम काट देंगे, ही कोई रीजन है बताइए। और हियरिंग के लिस्ट में इसको इंक्लूड करा देते हैं। सितंबर तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रिन्यू करिए।
ठीक है. तो dismissed as withdrawn करके ही न करें at this stage और hearing expedited. एक्सपेडाइटेड का हुजूर कर दिया जाए. हाँ. अदरवाइज वहाँ हुजूर. Learned senior counsel for the appellant does not seek to press the prayer for suspension of sentence of this appellant made through IA number so and so at this stage. Stop. हुजूर एक रिक्वेस्ट था, हुजूर एक प्रेयर था कि जो एक्यूज्ड हैं वो भी एडवोकेट हैं. तो हुजूर प्रॉब्लम होता है कि बार बार हम जब प्रेस नहीं करते तो कहते हैं कि आप तो बहस ही नहीं करते. तो बोलिए तो रिजेक्ट कर दे. इतना खराब ऑर्डर हो जाएगा रिजेक्शन का कि फिर हम जानते हैं हुजूर. आफ्टर सम आर्गुमेंट हुजूर कर दिया जाए. विड्रॉवल का तो एक रहेगा कि हाँ आर्गुमेंट कर रहे थे और उसके बाद वो लिखाए थे. तो ओ अच्छा, सॉरी लॉर्ड, हमको लगा कि मतलब डिसमिस्ड एज प्रेस्ड लिखा रहे थे, नॉट प्रेस्ड. तो विड्रॉवल का लिखाना है तो बोलिए विड्रॉवल वाला लिखते. हाँ हुजूर, ये ऑब्जर्वेशन देख करके हुजूर कर दिया जाए. हाँ जी. After some arguments, learned senior counsel for the appellant does not seeks permission to withdraw this interlocutory application at this seeking suspension of sentence of the appellant at this stage. Stop. He, however, submits that the appellant has remained in custody since 24th September 2012. That is 9 months less than 10 years. Stop. Therefore, the hearing of the appeal may be expedited. Stop. Learned APP does not oppose the prayer. On consideration of, in view of the prayer made on behalf of the appellant, IA number so and so is dismissed as withdrawn. Stop. However, since the appeal appears to be nearing custody period of 10 years, let it be listed before the appropriate bench and paper books be prepared by the office. Stop. Learned APP would procure the paper books from the registry. Lies, Your Lordship. My lord, one thing, my lord has just now, told that if the appeal is not heard by September, then only petitioner may renew his prayer for bail. The counsel for the appellant further submits that in case the appeal is not heard in the coming months, the appellant may be allowed to renew his prayer on completion of 10 years of custody. He is at liberty to do so. Yes. Criminal appeal number 31 of 2018, Mr. Anurag Kashyap for the appellant, Mr. Ravi Prakash for the state. इसमें भी अभी बहुत पहले रिजेक्ट हो गया है. हाँ, पहले हुआ था रिजेक्ट एट द स्टेज हुआ था. हाँ, तो अभी तो 15/4/17 से ही है ना. एनडीपीएस का 12 साल या 13 साल का है. 13 साल एनडीपीएस का नहीं है. नहीं, पॉक्सो है. पॉक्सो है. जी हाँ. दे दिए भाई. 231. हाँ, पॉक्सो का है. 12 साल का है सर. ये 13 साल सजा है और 17 और 5 लगभग 5 साल तो होने ही जा रहे. लगभग नहीं होने जा रहा. हाँ, 2 महीने रिजेक्ट हो गया मेरिट पे ना, तो कस्टडी पीरियड भी राइप होने पे कभी न देंगे. ये रिजेक्ट हुआ है 1 जुलाई 2019 को जी. कस्टडी 15 अप्रैल 17 से अभी 5 साल भी नहीं हुआ है, बल्कि आधा सेंटेंस तो होगा 6.5 साल. तो उसको अभी रहने दीजिए कस्टडी पीरियड पे. My lord, I will not make my submission on the merit that because it appears from your lordship's order dated 1/7/2019 that merits have been considered, and my lord was pleased to reject the prayer for bail at that stage. My lord, now we are moving the bail after 2.5 years. That's true, but custody is not right.
at that time, my lord has been pleased to reject at that stage. So, my lord, I am pointing out your lordship, subject to your lordship pleasure, my lord, because after 2.5 years we are moving for bail. My lord, in some cases, my lord, my lord, of the view that half of the sentence may be completed, but my lord, there are some additional grounds, my lord, showing the innocence of my lord the appellant, that is apparent from your lordship's order itself. So on that we have not been inclined. So now we cannot revisit our own observations or recording in record order, previous order. और 5 साल भी नहीं हुआ है, मतलब 10-13 साल में तो 6 साल होता, जी, इसलिए इसको अभी लेट हिम अगेन स्टे. After some arguments, learned senior counsel for the appellant does not press the prayer for suspension of this appellant made through IA number 3043 of 21 at this stage. So he submits that he would be renewing the prayer after 6 months. या क्या? after 6 months. 6 months, since the appellant is in custody from 15th April 2017 and would be completing more than 5 years of custody in the meantime. Then at APP, Mr. Ravi Prakash does not oppose the prayer. In view of the prayer made on behalf of the appellant, IA number so and so is dismissed as not pressed. Noble. Item number 3. Criminal Appeal DB number 1082 of 2018, Mr. Sitakumar Singh for the appellant. Mr. Kumar for Lordship, may kindly permit to argue Lordship this case. Praise ground is Lordship, co-convicted has been granted coordinate bench Lordship. Page 17 of my IA. Co-convict means Page 19 Lordship, annexure 2 of my IA petition, IA number 83 of 2020, in which the alleged opium was recovered from him, Ghanshyam Shah. ये इनका तो कस्टडी कम है अभी. Lordship, custody के साथ साथ may kindly be permit to read para 4 of the bail order, Lordship. वो तो हम लोग तो मेरिट पे फिर ले जाएगा, तो why should we मेरिट पर तो Lordship मेरा कुछ है ही नहीं, हमसे कुछ न रिकवरी है, हम बस ओनली हम स्टैंडिंग ऑन द चौक है Lordship. पॉइंट वो नहीं है ना, पॉइंट ये है कि जो भी मेरिट पे है उसको हम लोग कंसिडर करके बेल नहीं दिए हैं, तो मेरिट पे कोऑर्डिनेट बेंच का ऑब्जर्वेशन शुड नॉट बी द गाइडिंग फैक्टर फॉर दिस बेंच. नहीं, हम गाइड के लिए नहीं, बस एक सबमिशन के लिए हम Lordship इस बात को ला रहे थे, ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड ला रहे थे. वो जो है वो उसका कस्टडी था 29/2/17 से, इसका कस्टडी है 23/8/18 से. तो उससे पहले ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी रहे हम, 3 महीना 15 दिन रहे हैं Lordship. आई हैव स्टेटेड Lordship माय बेल पिटीशन. वो तो ठीक है ना, लेकिन अभी आपका मतलब वो जो क्या इसमें हाफ ऑफ द कस्टडी वाला भी इसमें नहीं हो रहा है, हालांकि एनडीपीएस है इसलिए हाफ कस्टडी इज नॉट. मेरा केस में Lordship एक ही चीज है ना कि हमसे कुछ ना रिकवरी नहीं है, हमसे सिर्फ कोई इंक्रीमेंटिंग आर्टिकल रिकवर नहीं है. मेरा इन्हीं के कन्फेशन पर नाम आया और सब्सिक्वेंटली हम अरेस्ट हुए और हम पर एलिगेशन है कि हम जा रहे थे दूसरे के साथ परचेज करने और चौक पर खड़ा था, और जिससे फोन से बात हुई वो भी हम नहीं है, वो भी दूसरा कोई है, मदन प्रसाद. आई एम नॉट मदन प्रसाद Lordship. So may kindly consider this fact also Lordship. कारण कि हम पर थोड़ा सा भी अगर रहता तो हम नहीं मूव करते, कारण कि कस्टडी हाफ ऑफ सेंटेंस नहीं हुआ है Lordship. Mr. Shiv Kumar Singh, Lordship. confession of a co-accused showing his complicity and also disclosing the complicity of other co-accused persons is binding in view of judgment of Hari Charan Kurmi, Lordship. 1964 Supreme Court 1184.
So, your involvement in NDPS is in view of that judgment binding. Now in NDPS, subsequently the coordinate bench has granted bail and this court is observing even after completion of the half of the sentence that in such cases we are not considering half of the sentence. Can the order of a coordinate bench can be a binding for us? No, Lordship. This is for only for my submission, Lordship. न्यू फैक्ट जो आया था इसलिए हम लॉर्डशिप देयर इज नो बाइंडिंग आई एम नॉट सबमिटिंग दैट दिस इज द बाइंडिंग लॉर्डशिप टू ग्रांट बेल लॉर्डशिप एनडीपीएस में ओपीएम निकला है। बस यही है लॉर्डशिप कि मेरे पास से नहीं निकला है, मेरे पास से कुछ नहीं निकला है लॉर्ड। गांजा भी कुड हैव कंसीडर इन दैट एस्पेक्ट कि ठीक है शिव मंदिर जा रहे थे चढ़ाने, बट हाउ कैन वी कंसीडर ओपीएम? तो वही तो घनश्याम साहब से निकला है। घनश्याम साहब के साथ आप भी अब बुनाइए थोड़ा दिन हम लोग। नहीं यू तो निकल गया हुजूर, निकलने दीजिए। हाँ तो आपका घनश्याम साहब के एग्जाम्पल पे एक ही चीज का पैरिटी क्लेम कर सकते थे मेरिट छोड़ करके कि कस्टडी, तो कस्टडी उसका हो चुका था, कोऑर्डिनेट बेंच उसको भी एक फैक्टर कंसिडर किया। हाँ उसको भी एक फैक्टर। तो यहाँ पर आपका वो कस्टडी भी तो नहीं हो रहा है ना, तो जब हम लोग सब सोच समझ के रिजेक्ट किए हैं मेरिट पे, तो अब कस्टडी भी जब नहीं हो रहा है तो कैसे, हाउ कैन वी एनलार्ज हिम एट दिस स्टेज? लॉर्डशिप उसके अलावा भी जो कोऑर्डिनेट बेंच है वो इंडिपेंडेंट विटनेस जो सीजर विटनेस एंड डिक्लेयर होस्टाइल उसको भी कंसीडर किया। वो सब तो हम लोग भी मेरिट पे कंसीडर किए हैं ना, इसलिए अब उसमें एक स्ट्रे स्टेटमेंट हियर एंड देयर दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज अ व्यू ऑन आवर। नहीं हम उस पर नहीं कर रहे, बस यही था कि जो मेन एक्यूज है वो निकल गया, तो मेरा प्रेयर था लॉर्डशिप की अगर हमको भी अब रिलीफ दिया जाता तो अगर अंडरटेक किया कि अगर हम किसी केस में इन्वॉल्व नहीं। मैन एक्यूज निकल गया, उसका ग्राहक को हम लोग रखेंगे तो बिकेगा सामान नहीं तो फिर बिकना शुरू हो जाएगा, फिर चेन शुरू हो जाएगा, इसलिए चेन को तोड़ने के लिए ग्राहक को रखना। मेन ग्राहक अगर इस केस से भी देखा जाए तो मेन ग्राहक मदन प्रसाद है, हम तो कुछ है ही नहीं। मदन प्रसाद के पास 1,10,000 रुपया रिकवरी हुआ है, तो अगर ग्राहक भी मेन देखा जाए तो वो है लॉर्डशिप, हम नहीं। बस ये भी डिफरेंशिएट है लॉर्डशिप, इसलिए इसको भी कंसीडर किया जाए, मेरा यही सबमिशन। कस्टडी होने दीजिए तब कंसीडर करेंगे लॉर्डशिप। After some arguments, then counsel for the appellant does not press the prayer for suspension of sentence of the appellant number 2 made through I number 83 of 2022 at this stage. Stop. He submits that he would be renewing the prayer after some time. Lordship. If he does not oppose the prayer in view of the prayer made on behalf of the appellant number 2, I number so Item number 4, criminal DB number 514 of 2019. Mr. Bandana Bharti for this. Yes. My lord, I beg to refer to your lordship's previous order, order number 523/9/2021. Certain Yes. directions were given, and it Yes, has been applied. And I have received their detailed counter affidavit, which is on record. It was filed perhaps on 3/11/2022. Now let I can justify this anomaly. No, you are making the pressing the prayer for suspension of sentence. Yes, No? in that case, I have pointed out certain irregularity and illegality in the charge, in the trial, in the cognizance, as well as in the finding. But irregularity in framing of charge in view of provisions of the CRPC 464. Yes, that were discussed in elaboratedly on the previous day, and now whatever I have submitted by way of counter affidavit, they have annexed the entire court records, and there I shall point out as to where the illegality occurred. First, Whether or you are prejudiced by this
conviction when you are knowing the fact, though the charge has not been framed under 27 of the Arms Act, but your discharge petition was rejected on that ground, and there is a consistent evidence that you fired from the pistol, country-made pistol, and it is known to you. So how you are prejudiced because of non-framing of the charge under 27 of the Act? No, I'm not saying that. I'm not saying that. With this logic, if this defect is allowed to perpetuate, then what will be the ultimate result? Because your lordship, under 227, Article 227 of the Constitution, is the supervising authority to know the correct procedural aspects to be taken up very well. What I was submitting, that the whole finding as against me is definitely replete with the unmindful approach of the court, non-application of judicial mind. Now, I shall take your lordship, your record will be there, this counter affidavit. If your lordship will kindly have a look to page 103, kindly have a look to page 103. That is the last conclusion of the charge sheet. Counter affidavit. Yes, पढ़िए. एकदम लास्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं. आरोप पत्र संख्या 291/15 दिनांक 10 के इतना दिनांक 23/10/16 धारा 302 34 भारतीय दंड विधान एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत समर्पित किया जाता है. So charge sheet was submitted under both the offences, 302 read with 34 of Indian Penal Code and 27 Arms Act. Now the next page, kindly come to the next page. This is order taking cognizance. This order taking cognizance, your lordship will find that it was correctly cognizance has been taken by the learned court below. Accordingly, cognizance of the offence under section 302 read with 34 of IPC and 27 Arms Act is taken. Now I take your lordship to the charge, order with respect to the charge. Kindly revert back to page 34 of the counter affidavit. Those things are not in dispute. 34. Those things are not in dispute, Mr. Tripathi. The charge sheet was submitted, the charges were not framed. Not framed, the discharge petition was also rejected that my lords was referring to. I have gone through it. Then there is also an order where the SFSL report with respect to the arms was admitted as evidence by the 293 subsection 4. That was also there in the record. Now what has happened, along with your lordship will find from the impugned judgment that the charges were framed. That order, your lordship, I am reading out at page 34. Order dated 22/3/2018. Later on, after taking into consideration of the material available in the case diary and with the record, I find sufficient material to frame charge against the accused persons, namely Amjad Gaddi, my client, Chema Gaddi, alias Afroz Gaddi, number 3, Mubin alias Moshim Ansari, and 4, Washim under section 302 read with 34 of IPC. I also find sufficient material to frame a separate charge under section 302 of IPC against accused Amjad Gaddi. Accordingly, charges were framed and explained to the accused person that they denied. You see, charges were not framed under section 27. No. And conviction was also not there under section 27. 27. Our argument is that in absence of a charge and a conviction for an offence of the Arms Act, how can the person be liable for murder by use of a weapon which was not
is what I was submitting. Because every aspect of the case, every uh, material which is taken understood that 330 का statement भी देखिए. That is good. What has to be seen such is whether during the trial all facts, including the use of a weapon to murder, were put before the trial court and to the accused, and the accused with full knowledge got a chance to defend himself, or whether these facts were not put before the trial court and he did not get a chance to defend himself on the accusation relating to possession and use of arms, and that is how that prejudice has been caused. Yes, Because that is unless miscarriage of justice has resulted because of such an irregularity or illegality, the higher court would not ordinarily interfere in the conviction. That's the principle which has flowed down from the case of William Slaney, and till date it is being followed. Prejudice test is the main thing. Had you been convicted under Section 27 without framing a charge, then it would have been a different case. absolutely different thing. But here it is not even a framing of charge, not a conviction, but facts, incriminating facts relating to use of the arms has come in the trial on evidence, and which you got an opportunity to rebut or defend. And in that way, you are not taken by surprise by such a finding of use of arms against you. So that's the vital thing if we have correctly understood. Now, Lordship, kindly bear with me. What I am advancing my argument that basically I am saying that I have been convicted without application of judicial mind and the proper appreciation of evidence. If I am left with a sentence or conviction of committing a murder of a person with the help of firearms, and I am not found guilty by the learned trial court, nor any finding that I have, though in the body of the judgment what he has explained that will be read. But he says that I am not a convict or I am not an accused convicted under the Arms Act, which was used for commission of murder. Rather, he has not framed the charge nor gave any finding with regard to the Arms Act, but the evidence remains consistent that no prejudice has been caused to you because everywhere in your 313 also, this was clear कि आपने गोली मारा था. So, Denied. we can say, instead of non-application of mind, we can say that they are very slow in their process, that they could have. But the trial judge. Mr. Tripathi, a contrary situation may also would have arisen, hypothetically, that the offence of Arms Act was tried in a separate trial. Follow? And then the accused was acquitted, like it happened in the other case in which you were arguing. I think you remember that mass. हम लोग जो कहते थे ना पिछले बार जो बैठे थे, we used to say to police that you institute one FIR for केस करा के proceed. हाँ नहीं, जैसे एक एग्जाम्पल when I was sitting with sister justice, इसमें 4 FIR हो गया था. आप Mr. Tripathi, आप you remember the other case जो लोहरदगा इलाके का था जिसमें कि 24-25 लोग चलाने में थे और that was of Sukhdev Nagar Ranchi. नहीं, My lord is referring to a burning case, killing 3 persons and survived. उसमें क्या हुआ था? उसमें एक्विट हो गए थे. पुलिस केस जो हुआ, बोला वही मॉब पुलिस पर स्टोन पेल्टिंग कर रहा था, अलग से एफआईआर हुआ, चार्जशीटेड हुआ, ट्रायल फेस किया, they were found acquitted. Then I stood before this honorable court, if for the same occurrence, same assemblage, illegal assemblage, they are not found guilty and they are acquitted,
And the basic principle that a case which is emanating from the same occurrence, two cases are lodged that ought to have the same court, which was not done. Irrespective of the fact that one is of magistrate trial and another is of sessions trial. But they One all more, one more example could be that the Arms Act case is tried by a separate trial, and there the same accused is acquitted of the charge under Arms Act. Now, if that is so, that acquittal or the evidence recorded in that Arms Act trial will operate as an issue estoppel in the other case. So that becomes a bar because of the principles doctrine of issue estoppel. यहाँ पे the situation is neither that there are separate trials, nor there is a doctrine of issue estoppel in application. The situation is that you have not been charged, neither convicted of an offense, but incriminating facts all were brought before the trial court, and he convicted it under section 302. Whether that error would amount to giving you a plea of miscarriage of justice, or it would be irregularity which has not resulted in anything. So far as the suspension issue is concerned, you have a interesting point, as we also feel so, but that may be argued at the time of hearing. on that count, I'm not saying that I deserve to be acquitted. Until and unless it is with threadbare hearing is there. But on the face of it writ large on the face of the interim judgment, on the basis of the documents which have been brought in record by the prosecution, they themselves admitted to kindly have a look to Annexure D of the counter affidavit. वो तो उनका एक्सप्लेनेशन लगाया हुए हैं वो। हाँ, उसमें बोलते हैं, लोक अभियोजक बोलते हैं कि बाद के आदेश फलक से प्रतिलक्षित होता है कि इस बाद में दिनांक 26/10/16 को सभी अभियुक्तों के अंतर्गत धारा 302/34 भाग तथा धारा 27 आम सह में संज्ञान लिया गया था तथा 3/18 को अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 320 भाग के आरोप गठन माननीय न्यायालय द्वारा किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 27 आर्म्स एक्ट के आरोप का गठन नहीं हुआ है। इस त्रुटि के संबंध में श्री शिवाकांत मंडल अपर लोक अभियोजक का कहना है कि मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य रहने के बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप को परिवर्तित या संवर्धित नहीं किया जा सका, न ही मेरे द्वारा इस और माननीय न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया जा सका। मेरे विचार से यदि आरोप गठन करने में कोई त्रुटि हुई है तो संबंधित लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह माननीय न्यायालय से त्रुटियों के सुधार हेतु विधि अनुसार अपेक्षित आवेदन दाखिल करे। कि कब बोल रहे हैं 16/10/2021 को जजमेंट कब हो गया? और नहीं, अब जो इनका विजडम इनको सजेस्ट किया वो लिख दिए हैं, बट दैट लोक अभियोजक का रिप्लाई नेक्स्ट पेज में है, वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है। लास्ट खाली क्रूशियल पॉइंट हम बता देते हैं। पेज 12 में फर्स्ट पैराग्राफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि जो डिस्चार्ज पिटीशन को रिजेक्ट किए हैं, बाद में विचारण के दौरान मेरे द्वारा आरोप पत्र में उल्लेखित साक्ष्यों का साक्ष्य प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी में अंकित बयान के अनुसार कराया गया। साथ ही कांड में जब्त 9 mm के खोखा एवं पिलेट को भी न्यायालय में वस्तु प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया एवं परिचारी प्रवर के शास्त्र जांच प्रतिवेदन SFSL की रिपोर्ट एवं अन्य संदर्भित कागजातों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श अंकित कराया गया। लेकिन इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप परिवर्तित या संवर्धित आइदर चेंज और एडिशन नहीं किया गया।
मेरे द्वारा भी माननीय न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं, इट इज ए प्योर कंसेशन that I have also not pointed out. विचारण के उपरांत अमजद गद्दी के पास से वो तो जो हुआ उसका रिजल्ट वो बता रहे हैं. So this is denying the fact. Nobody is denying. Now, honestly, what I feel, my lord, if your lordships are remanding the case back for fresh charge or additional charge under 27 Arms Act, then my client will get ample opportunity to cross-examine on that point. Now, what my learned friend says, what my honorable brother judge says, that you got the chance. While discharging you, I got the chance of cross-examining all the witnesses, even on the point of charge. So I am not supposed to cross-examine the witnesses for the charge which has not been framed. That is also there. This is never contention of this court that you got a chance. My contention is that nothing is causing prejudice to you after this, and you have not filed an application that my matter may be remanded for the purpose of. इसीलिए हमको सप्लीमेंट्री एफिडेविट के लिए बोला गया था. दैट आई हैव कंप्लाइड. I have filed that prejudice has been caused to me. Now, under that circumstances, now my interest is not for the academic discussion. We have discussed everything. No, we are considering, Mr. That is what I am coming to. That this court pass an order Yes. regard to demand, then you have to file a separate interlocutory by way of supplementary. You cannot raise that issue. Then by way of No, and that Basically, the lordship wants me and wants me to. I have, if so advised, I am to file a separate petition, IA petition for. no, that the appellate court finally hearing the matter would take a call on that. Yes. At this stage, why should the court take a view on that one way or the other that the conviction has suffered? We are not hearing the matter finally. We are at the stage of suspension of sentence. Suspension of sentence, but prima facie, I have been able to make out, and they have admitted this anomaly. No, that we have appreciated. That we appreciate. If you want to press the IA, which we are not inclined to allow at this stage because of all other reasons also. The offense and the nature of witnesses. I do agree. I was harping only on the point that I have remained all along in custody for about 5 years. I am languishing in jail. That's now not this defect is also there. This indelible defect which will go up to any extent if it is not corrected. Then it will be decided by the bench who will hear this appeal. And your lordship, नहीं, इसमें ऐसा है, अगर यूजुअल वे में इस चीज को पॉइंट आउट करने के बावजूद भी अगर इस उच्च न्यायालय के एक बेंच ने ये कहता है कि इट विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फाइनल हियरिंग, I invite that position, and there is a logic also. But at the same time, with regard to the time of hearing, if some indulgence is to be shown by this honorable court that issue has arisen, so let it be decided by giving preference to other cases. हम 5 साल से जेल में हमको काहे सुनेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं. हम सस्पेंशन के लिए आए थे, ठीक है, ये सब हमने पॉइंट आउट किया. लॉर्डशिप भी समझ रहे हैं कि ठीक है, हुआ जो भी हुआ उसको एट द टाइम ऑफ हियरिंग इट विल बी कंसीडर्ड. तो हियरिंग का टाइम तो कम से कम आप बोल दीजिए कि प्रेफरेंस देके इसको हियरिंग कर दिया. बेल तो इसको मिलेगा नहीं सर, मेरिट में. आई फेयरली एग्री. तो नेचर ऑफ एविडेंस है. तो आप आइए पे ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन चाहते हैं या प्रेस नहीं करना चाहते हैं? फिर हम लोग को आपका ये सब 27 वाला आर्गुमेंट को फिर नोट करना. some argument pointing out these defects. हाँ, तो फिर If your lordships are deciding that the issue which the appellant has raised through his counsel will be decided by the bench which will hear this case, final hearing, then my next submission will be that primacy may be given. पॉइंट ये है ना कि आप ये सेक्शन decide what they will do. सेक्शन 7 वाला प्ली यदि आप अपना चाहते हैं कि हमारे ऑर्डर में आज आ जाए तो फिर एपीपी का जवाब भी उसमें हम लोग को लाना पड़ेगा.
हाँ हाँ, और एपीपी का जवाब जब आ जाएगा ना तो एक प्रोनाउंस्ड व्यू निकलेगा उससे, जो आपको हियरिंग में क्लीन स्लेट पे आर्ग्यू करने में मुश्किल करेगा। ये भी मुश्किल बात नहीं। एक चीज है, अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से देखते हैं और प्ली तो सीधा कन्फेस कर रहा है कि आई फेल टू पॉइंट इट आउट, बट ट्रायल हाँ, तो उसका तो हम लोग नोट कर लेते हैं अपने डायरी में, हाँ जज का नाम वगैरह भी नोट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, फिर अदरवाइज भी वी हैव अदर जुरिडिक्शंस। कोग्निजेंस आ रहा है, चार्जशीट हो रहा है सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट में, कोग्निजेंस आ रहा है। आप एक बेर जब आपके पास ट्रायल के लिए आता है और चार्ज का डिटेल्ड हियरिंग होता है, आप उसको रिजेक्ट करते हैं, हियरिंग तो हुआ होगा आपको डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज सेक्शंस अंडर कोग्निजेंस हैज बीन टेकन, तब आप एकदम लाइक ओब्लिवियन होके इसको व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक एन ऑस्ट्रिच एकदम ये कर दे रहे हैं। 27 एक्ट आर्म्स एक्ट का कोई विस्पर नहीं है, या क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें चार्ज, उसका भी कोई रीजनिंग नहीं है। तब तो हमको यही माना जाएगा ना, आई शुड डिस्चार्ज अंडर 27, आई हैव नो फाइंडिंग इज देयर दैट आई एम गिल्टी ऑफ सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट। द सेम लॉजिक एज योर लॉर्डशिप pointed out that if you have not used the arms, then how come the learned trial gave a finding that I have gunned him to down, I pumped the bullet on his chest which led to his death on the spot. These things are there, will be considered at the time of hearing. लेकिन आप जो कहते हैं कि हम इसीलिए आफ्टर